Thank you very much for giving me the opportunity to come and present my case here. First of all, respected Major General Hamid Shafiq, respected Brigadier Nadir, respected senior professors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. So, we are facing a national crisis situation. At present, as Dr. Wajiha has already discussed, the severity of the ischemic heart disease, that after just 30 to 35 seconds, we get a new case of MI in our emergencies, and this incidence is increasing day by day. So we can call it a national crisis situation. So on one hand, when we are having so many young persons who are increasing in number and coming with so many risk factors, so there is an urgent need to plan and to work on the control, secondary prevention as well as primary prevention of heart attacks. So I would like to share our experience at AFIC. Some of the risk factors Dr. Wajiha has already mentioned, and I want to discuss a very important risk factor, that is that depression associated with heart attacks, along with some other risk factors like using high cholesterol diet, and another risk factor which is a high positive family history of ischemic heart disease. That factor was neglected in the last many years, resulting in many young patients who come to us with multiple number of stents, because in such patients, the disease is too much severe, and they have frequent episodes, and they have early age of presentation. So, I would like to share some interesting cases that we managed at AFIC. ये स्लाइड से देखिए स्लाइड ऑन करें. So as the situation is so much severe, so we are seeing so many young patients on daily basis. So now we have to see that we have to guide the patients that you have to be very much serious about your diet, and if the family history is positive, then you have to be very much careful regarding your diet, lifestyle, exercise, and you should not be taking any sort of stress. Some patients, they developed MI because they were taking too much job stress. Similarly, some patients, they are too sensitive and they take stress on minor issues. Similarly, we picked up many new cases of depression who presented with MI, and after detailed history, we came to know that the patients were actually having depression for the last 2 years, for the last 5 years, 6 years, even 8 years. I still remember one patient who came from that patient came from Sargodha, and his age was 41 years. We wanted to know the root cause, but he was not diabetic, non-hypertensive, non-smoker, but he was having depression. And then we took a detailed history, and then we referred to the clinical psychologist, and after some sessions, and even after starting antidepressant, the patient started improving. And alhamdulillah, he is now much better. Now this is another patient, 36-year-old patient who was a Pathan from Mardan. His primary angioplasty to LAD was done. Now, what were the risk factors? His family history was positive. 3 uncles, his chachas, died due to MI in their early 40s and 50s, and then he was taking high cholesterol diet. So when I inquired, तो उसने जवाब दिया कि जी मैं तो मुझे सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं हर वक्त डेली में बीफ मुझे बहुत पसंद है, और वो मैं खाना जो है पसंद करता हूँ. तो जब हमने उनसे कहा कि व्हाट अबाउट जो वेजिटेबल इनटेक, तो उन्होंने कहा कि जी मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन सिर्फ तब सब्ज़ी इस्तेमाल करता हूँ जब उसमें गोश्त मिक्स हो, वरना तो मैं बिल्कुल खाता नहीं हूँ. इसी तरह से देन वी मोटिवेटेड दैट पेशेंट दैट प्लीज़ यू हैव टू इवन इंक्रीज सैलड्स, यू मस्ट टेक अ बाउल फुल ऑफ सैलड पर डे, एंड यू मस्ट, हमने उनसे कहा कि आप
अपने दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा करें कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर द हार्ट पेशेंट्स. एंड सिमिलरली ही वॉज हाइपरटेंसिव बिकॉज देयर वाज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन पॉजिटिव एंड ही वॉज अग्रेसिव एंड क्वाइट शॉर्ट टेम्पर्ड. सो जब मैंने उनको इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा जी देखें आपको पता होना चाहिए कि मैं तो एक पठान हूँ और वो पठान जो है उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है. तो मैंने उनको समझाया कि इट्स ओके बट इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर हाइपरटेंशन यू हैव टू लर्न पेशेंस. Similarly, we are working on the behavioral therapy of our patients as well, and I'll be sharing some other cases. We have another case from Ahmedabad. He was a 39-year-old person. His primary angioplasty to LAD was done. So ये जो patient थे, he was very slim and smart and he used to do exercise 1 hour per day और 2-3 दिन वो जिम भी करते थे. But in spite of that he was using high cholesterol diet. और जब मैंने उनकी वाइफ से डिटेल्स ली तो उन्होंने कहा कि अगर हफ्ते में ये 2-3 दिन होटलिंग ना करें तो इनका बिल्कुल इनको चैन नहीं मिलता. मैंने कहा कि भाई वाई यू वर सपोर्टिंग हिम, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच कि आप उनके साथ उनको सपोर्ट करती हैं. तो शी सेड कि जी इस बारे में वो मेरी कोई सुनना पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजाते रहते हैं जब तक मैं आती नहीं हूँ बाहर और इनको अकम्पनी नहीं करती. सिमिलरली they were actually 6 brothers, he was the eldest और इनकी भी ये हैबिट थी एंड बेसिकली ही बिलोंग टू लाहौर. और उनकी वाइफ ने बताया कि बहुत ज़्यादा फूड लवर हैं और जब लाहौर छुट्टियों पर जाना होता है तो पहले से ये मुख्तलिफ होटल्स में बुकिंग करा लेते हैं कि इस जगह का ये तकिए अच्छे हैं, इस जगह की निहारी अच्छी है और वहाँ पे जाके बुकिंग कराते हैं. और यही हैबिट्स इनके ब्रदर्स में है और ये इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी रिक्रिएशन है. ही सच अ बिग फूड लवर. सो when he presented, he was in acute pulmonary edema and a failure and he was in a very critical condition. So after that, our team also motivated him and alhamdulillah, he is much better now. अभी वो 6 months के बाद दोबारा आए थे और उन्होंने अपनी सारी जंक फूड छोड़ दिया और उसके अलावा हेल्दी ईटिंग शुरू कर दी है और उसके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी डाइट में चेंजेस और इसी तरह से बाकी चीज़ें बेहतर कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और सबसे अच्छी न्यूज़ दैट आई वांटेड टू शेयर इज़ कि उनके 5 यंग ब्रदर्स थे जिनकी वही हैबिट्स थी जो इनकी थी और उन ब्रदर्स ने भी काफ़ी सबक हासिल किया है और 2 की वाइफ्स ने बाइकआउट कर दिया कि हम किसी जंक फूड में नहीं जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में, बिकॉज ये अभी मौत के मुँह से निकले हैं. तो इसीलिए सब ने काफ़ी सबक हासिल किया है. सो अल्हम्दुलिल्लाह इस पेशेंट में नॉट ओनली वी वर एबल टू अचीव गुड सेकेंडरी प्रिवेंशन बट प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द अदर 5 ब्रदर्स एज वेल. जबकि हमने उनको मैसेज भी दिया और एक की वाइफ भी आई तो उनको भी हमने गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह. So now, as Dr. Wajiha has already mentioned, alhamdulillah, a lot of our patients were smokers, and not only smokers, they were using naswar as well. काफ़ी ऐसे पेशेंट्स की तादाद है कि जो कि स्मोकिंग तो छोड़ देते हैं. जैसे वन पेशेंट वाज हैविंग ही केम विद अ ब्लॉकेड इन हिज एलएडी और 6 years बैक उनकी पीसीआई टू आरसीए हुई थी और जब मैंने पूछा तो पता चला कि ही वाज अ स्मोकर और लास्ट टाइम उन्होंने स्मोकिंग तो छोड़ दी लेकिन उनको किसी ने ये नहीं बताया कि नस्वार इज़ इक्वली डेंजरस और वो नस्वार लेते रहे और अभी भी वो 1 पैकेट पर डे नस्वार ले रहे थे. Then I stopped him कि भाई it is equally dangerous, you have to because it has a lot of tobacco content in it. तो मैंने उनको बताया कि आपने प्लीज़ ये छोड़नी है और उसके बाद जो है हम ऐसे पेशेंट्स को भी रेफर देम टू आवर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट. और जो भी पेशेंट्स हम उनके पास भेजते हैं वो पूरी एफर्ट करती हैं. उन पेशेंट्स के सेशंस होते हैं और वो पेशेंट्स माशाल्लाह से मेजॉरिटी दे हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग अल्हम्दुलिल्लाह. And I fully agree with respected Major General Hamid Shafiq कि सर ने कहा कि स्मोकिंग में there is all or none principle. वो सारे मरीज़ जो उस वक्त MI के वक्त फ़ैसला कर लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं कि हम मौत के मुंह में गए, हमारी इतनी बुरी हालत हुई, हमने इतनी तकलीफ़ उठाई तो अब हमें इसको छोड़ना है. तो मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर सक्सेसफुल. लेकिन ज़्यादा जो सोच विचार से काम लेते हैं और कहते हैं हम 2 महीने 6 महीने इतना अरसा लेंगे तो एट टाइम्स दे आर नॉट सो मच बेनिफिशियल. So now we come to the third case. We have another patient, 44-year-old patient. He came from Kharia और ये हमारे पास 1 year ago आए थे. इनको he was having chest pain, CCS class 2, suffocation, heaviness and pain radiating to the shoulder. His EF was well preserved. So basically he had an anginal episode और उसके बाद इनकी risk factors में family history was strongly positive. His father, his uncles and 3-4 cousins died in their early 40s and 50s due to MI.
So this person was a chronic smoker for the last 25 years. He was using 1 pack of cigarette per day, and not only that, he was also in habit of high cholesterol diet. He was going to hotels and taking junk food. So उस वक्त मैंने भी काफ़ी मोटिवेट किया a year ago कि you must stop smoking because already you are a high risk patient, because जो family history के patients हैं अगर वो smoke भी करेंगे और high cholesterol भी होगा तो obviously they are at very very high risk. So अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये अभी few days पहले आए थे after a year, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी जब मैं आपसे प्रॉमिस करके गया था तो मैंने 100% स्मोकिंग छोड़ दी है, और उसके अलावा मैंने सैलेड्स आपने कहा था उसका इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर लिए, और यहाँ तक कि मैं अपने लंच में भी सैलेड लेकर जाता हूँ, या मेरा बैटमैन लेकर आ जाता है और मैं एक बाउल फुल ऑफ, सब लोग समोसे और टी ब्रेक्स खाते हैं और मैं अपने लंच में जो है बाउल फुल ऑफ सैलेड आई टेक. और उसके अलावा जो है माशाल्लाह से अभी उन्होंने एक कहा है कि जी मैं थोड़ा एक्सरसाइज में रेगुलर नहीं हूँ, मैं 2-3 दिन करता हूँ, लेकिन हम उसको भी अभी बढ़ाऊँगा और मैं बेहतर करूँगा. बट आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरी ये आदत ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स ऑफ योर टीम. So now we come to another patient in which our main effort was to do a primary prevention of that patient. So this is a very interesting patient. He came from Rawalakot. He was a 33-year-old patient. He presented with typical chest pain, heaviness, congestion radiating to the shoulder, along with he was a hypertensive. So all his cardiac evaluation came out to be normal. Even CT angio was normal. So he presented with lack of appetite, lack of sleep, weeping episodes, and he lost all his interest in life. And even he was having these things for the last 2 years. And repeatedly he got admission. But when I inquired from his brother, he attempted suicide 2 times. And his brother stopped him from that because there were some family issues due to which he was too much upset and disturbed. And अभी तक उससे किसी ने पूछा नहीं था और उसको सब पेन किलर्स दे रहे थे. So first time I took his detailed history and I motivated him that no, you have to leave this depression and we'll be helping you to our best level. So I also motivated him, and then I referred this patient to our clinical psychologist, and then we started his management plan properly, and then he was he was referred to a classified consultant psychiatrist, and I also discussed the issue with him, and then he was put on antidepressants. He also remained admitted in the Armed Forces Institute of Mental Health, and then we did his regular follow-ups, and alhamdulillah his regular psychotherapy sessions were done by our clinical psychologist for almost 6 months, और अभी माशाल्लाह से 1 साल हो गया है, उससे हमारा regular contact है, और alhamdulillah he is much better, और उसका बहुत ज़्यादा improvement हो गई है alhamdulillah. So this is a patient जिसमें EF is well preserved, और ये जो patient है इसकी बहुत अच्छी quality of life हो गई है माशाल्लाह, और this is a great alhamdulillah achievement. So now I just want to emphasize this issue that if we want to genuinely help our patient, we have to focus on the proper history taking. Why? Because until and unless we'll be highlighting the risk factor, that why this heart attack has happened, what is the cause, what is the root factor, why this young patient has come to us. So the proper best management is not possible. If we just do angioplasty or the management without working on the risk factors, patient will keep on coming again and again after 1 year, after 2 years, within 3 to 4 years, and that will only and only be the partial treatment of the patients. So similarly, it should be emphasized to our medical students in the early formative years. It should be made compulsory for our residents, for our trainees, that they should be taking proper history. It should be mandatory. It should be part of the internal assessment. Similarly, and the aim should be to do quality care of the patient rather than the quantity. We must focus on the quality care, because this is the only and only way by which we can reduce the number of heart attacks. We are a third world country with such a poor economy and with such a huge burden of heart attacks. And similarly, we must increase awareness of heart attacks among the population, among schools, colleges, universities. Similarly, alhamdulillah, we are doing another thing in which every survivor of MI, our team guide them and coach them properly.
कि अब आप अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करें, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड यू विद अ न्यू लाइफ, नाउ यू हैव टू हेल्प अदर्स. हमारे बहुत से स्मोकर्स दे हैव बिकम कम्युनिटी, दे आर प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सर्विसेज, दे आर हेल्पिंग अदर पेशेंट्स, और वो बहुत सारे दूसरे लोगों की स्मोकिंग सेसेशन पे काम कर रहे हैं. इसी तरह से हमारे बहुत पेशेंट्स आफ्टर द बाईपास सर्जरीज दे आर हेल्पिंग अदर पेशेंट्स, और माशाल्लाह से इससे वो कह रहे हैं कि हमारी डिजीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल हो गई है. So at the end of the day, I just want that I want that all of my respected seniors and colleagues, they must take this department seriously, and we have to increase the number of preventive cardiologists in the country, and we have to start the lifestyle modifications from the school life. जैसे लोगों को आदत नहीं है सब्जी की, so we can encourage the teachers कि अपने बच्चों को जो mothers हैं वो lunch boxes में fruit दें, और कैंटीन से जंक फूड, समोसे, जंक फूड, लेस, चिप्स, पेप्सीज, इनका बैन होना चाहिए. वहाँ पे हेल्दी डाइट्स होनी चाहिए, और उसके ऊपर उनकी बल्कि मार्क्स होने चाहिए ताकि इसमें को इनकरेज किया जाए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक्स अ लॉट. If you have any questions, I'll be grateful. Madam,